Hello Sagittarius and welcome to your weekly bonus love reading. So this is going to be a love reading from the 20th to the 26th of January, and this is going to be a general reading. So take only those messages that resonate to your story and leave the rest. Okay, energies might be vice versa and time is fluid. So let's see. If you had a calling to click on this reading, then these messages are for you. Let's see messages for the sign of Sagittarius. Let's see messages for the sign of Sagittarius. Let's see messages for the sign of Sagittarius. Okay. Definitely. Wow. Very clear message. Very clear message. किसी रिलेशनशिप में आपको फेलियर हुआ है, लाइक यू आर अनसक्सेसफुल इन सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, और किसी को आपकी माफ़ी की ज़रूरत है बिकॉज आपकी किसी के साथ एंडिंग हुई है. And bottom of the deck we have the balance, and then we have the envy, and we have acceptance. So with these cards I can see that कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके और आपके पर्सन के दरमियान, जिन्होंने आपके और आपके पर्सन के दरमियान बैलेंस को ख़त्म किया, आपकी उनके साथ एंडिंग कराई रिलेशनशिप में. लाइक दिस पर्सन वाज ऑलरेडी यार ये यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में थे, बहुत ज़्यादा प्राइड में थे, और साथ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन्होंने कसर पूरी की और उन्होंने आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके आपके पर्सन को ट्रैप करके आपसे दूर किया. एंड राइट नाउ सीरियसली आई सी दैट द फर्स्ट टू cards that I got are forgiveness and relationship. So somebody wants a relationship with you after having an apology from you, बिकॉज आपके साथ एंडिंग के बाद इन पर्सन को भी दे आर फीलिंग अनसक्सेसफुल, दे आर फीलिंग लाइक दे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ. दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि आप दोनों के बीच में कोई दुश्मन है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिन्होंने आप दोनों को अलहदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आप दोनों की एक दूसरे के साथ एंडिंग कराई. एंड राइट नाउ ये जो आपके पर्सन है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अनसक्सेसफुल. बहुत ज़्यादा टायर्ड एनर्जी में उनकी पिक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल एनर्जी में उनकी पिक कर रही हूँ. However, I see that after having like forgiveness in your relationship, that's up to you that अगर आप इनको माफ़ करना चाहते हैं. Like I will tell you one thing, if you intuitively feel that you should be with this person, अगर आपका दिल उनकी तरफ माइल है तो अगर उनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी आती है, you should accept that apology because acceptance की भी एनर्जी थी. You should accept that apology and you should give your relationship another chance. All right, so let's see some other messages for the sign of Sagittarius. Let's see some other messages for the sign of Sagittarius. किसी चीज़ में आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप यू आर फीलिंग लाइक गिल्ट की फीलिंग आ रही है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है आपको. और because this person hurt you a lot, this person hurt you deeply. However, I see that you are manifesting a renewal with this person, like you want to start this connection from the scratch, you want to start this connection from the beginning. Okay, from a new beginning, from a new perspective. और इनसिक्योरिटी की फीलिंग है तो डेफिनेटली वो तो आपको होगी, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी या फिर एक पर्सन का अगर बिहेवियर ही थर्ड पार्टी हो या एक पर्सन की ईगो इश्यूज ही थर्ड पार्टी हो, तो डेफिनेटली जो पर्सन इनोसेंट होता है, जो पर्सन सिंसियर होके चल रहा होता है अपने पर्सन के साथ, उनको इनसिक्योरिटी फील होती है. However, मैं ये देख रही हूँ that you are manifesting a miracle from the universe, and I see that miracle happening for you. Like miraculously, this person will transform, and miraculously this person will you will have a renewal with this person, and in this connection. Okay, you will be having a renewal in this connection. So let's see some other messages for the sign of Sagittarius. Let's see some other messages for the sign of Sagittarius. We have the Hermit, Virgo energy. Then we have Five of Swords,
Aries, Leo, Sagittarius, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, Three of Swords, the Magician. Then we have the Three of Cups. Yes, definitely ये जो third party है with the Three of Swords and with the Three of Pentacles, with the Three of Cups, इसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ है। इसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आया है और आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी है। इस वक्त आपका रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी के धारे पे खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से, या नेक्स्ट एक्शन आपको क्या लेना चाहिए। हाउएवर विद द हर्मिट, I see that you have secluded yourself from the environment. You are not doing anything. However, the universe is guiding you that you are very heartbroken. लेकिन जो आप अच्छी चीज़ें आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, they are coming towards you. जो कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी तरफ आ रही है विद द एट ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन कार्ड ऑल्सो shows communication, and the three of cups shows happiness, celebration, joy, expansion, and I see that is coming your way. So आपको ज़्यादा अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है, because in the future something good will be happening. I know that this is a love reading, but I see that there is a huge massive shift that is going to be happening in your career and finances, and आपका दिल एकदम से खुश हो जाएगा with the three of cups. You will be having reasons to celebrate, okay? So you don't need to worry about that, because I see that communication जो भी आप manifest कर रहे हैं और जो चीज़ें आप अपनी life में manifest कर रहे हैं with the magician that are coming your way. And if you are trying to attract your person by doing some affirmations, or then I see that your person is feeling that pull towards you. However, I also see with the three of swords कि ये person जो हैं आपके person, they are very heartbroken over you right now, because they know that they broke your heart, and they are like they are getting their karma. Show me this person's feelings and energies towards the Sagittarius. Show me this person's energy and feeling towards the Sagittarius. Okay, we have the Tower. Yeah, definitely Tower moment to आया है. See the very clear message. A Knight of Swords, a Knight of Wands with the Tower. Because of this person's manipulative behavior, there was an ending between the two of you, and ये कोई छोटी मोटी ending नहीं थी, इसने आपके दिल और दिमाग को हिला के रख दिया. However, with the Seven of Cups and with the Fool, I see that new beginnings will be coming your way. Bottom of the deck, we have the Devil, we have Capricorn energy, then we have the Moon, Pisces, and Pisces and Cancer energy. Then we have the Hierophant, that is Taurus energy. So I see with the Seven of Cups with the Fool is representing new beginnings that are going to happen in your life, that are going to come in your life. And with the Fool, I see that this person wants to take a leap of faith towards you, and they want to come towards you. However, I see with the Devil, this person is obsessing over you. Like in person, they wanted to give you a relationship in the past, but this person kept their feelings hidden with the Moon card. And with the Hierophant, it could be one of the reason why they were so insecure while they were with you in this relationship, because this person belongs to a very traditional family and they are very afraid of their family traditions. That's why this could be one of the reasons that they kept their options open, and they were focused on their other people, and they were not fully transparent with you about their feelings and emotions. And that's why with the Knight of Wands, this person was very in and out and very wishy-washy. और इसीलिए आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हुआ, और बहुत बुरी, बहुत सडन, बहुत एब्रप्ट एंडिंग थी, जिसने आपको हिला के रख दिया.
Show me Sagittarian's feelings towards this person. Show me Sagittarian's feelings and energies towards this person. जो आप जिस पेन से गुजर रहे हैं ना Sagittarius, इसी पेन से आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं. We have the 9 of swords, then we have the death, we have the emperor and 2 of wands. You are dealing here with a Scorpio and Aries. Ace of swords, Knight of cups, 7 of wands. This person was in a defensive energy, but now this person wants your apology. This person wants to apologize to you, and this person wants to give you an offer of love and peace. However, with this Ace of Swords, I see that you are going to get clarity and communication from this person, and this person will be giving you a new beginning offer, because this person is waiting for the right time. This person is introspecting about the situation with the 2 of wands. एम्परर है तो ये पर्सन अपने ईगो इश्यूज पे वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स है और डेथ है. ये पर्सन भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप पेन से गुजर रहे हैं. दे आर हैविंग देयर कार्मा. थर्ड पार्टी ने इनको डिच किया है, ठीक है. थर्ड पार्टी के साथ अब इनकी एंडिंग हुई है, एंड दे आर रियलाइजिंग योर वर्थ बेसिकली. और ये जो इस वक्त जिस पेन से गुजर रही हैं, दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स राइट नाउ. And this person is going through a lot of pain, chaos, drama, facade. और बहुत बुरी एंडिंग हुई है इनकी लाइफ में. कोई बहुत बुरा टावर मोमेंट आया है जिसकी वजह से ये इस वक्त सफ़र कर रहे हैं. However, this person with the Knight of Cups, I see that they have feelings and emotions for you, and this person wants to give you a love offer. This person wants to give you an offer of love and peace. And with the Emperor, I see that this person wants to give you a stable relationship. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation. Show me the outcome of the situation. In the outcome, we got 8 of Cups, then we got the 4 of Pentacles, Hangman, and the 10 of Pentacles. So situation कुछ ऐसी है. Bottom of the deck we have 6 of swords, then we have the Queen of Cups, then we have the 10 of swords. So much pain, so much pain, so much chaos, so much facade, so much trauma. देखिए with the 10 of swords, इन पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स तो हैं, और आप इनके साथ कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है. लाइक यू कुड बी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़. ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप पेन फील कर रहे हैं after walking away from you with the 8 of Cups. However, with the 4 of Pentacles, this person is still holding back because they are trying to introspect about the situation, and with the Hangman, this person is not taking action. Virgo energy. However, with the Queen of Cups, the good thing is that with the Queen of Cups and with the 10 of Pentacles, I see that this person sees their be-all and all with you. This person sees their happiness with you, joy, expansion. This person wants to give you a long-term committed relationship because this person has feelings for you. और इस वक्त आप लोगों के बीच में ना सिर्फ इमोशनल बल्कि फ़िज़िकल डिस्टेंस भी आया हुआ है. तो ये पर्सन जो हैं ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं. बट if you want me to tell you that is this person is going to take action, then I don't see them taking action in the near future. I have to be honest with you, because they are still holding back. However, this person has feelings and emotions for you, and I see that कि क्वीन ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो लॉन्ग रन में इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र आ सकती है. So I will leave this reading over here. Thank you so much, Sagittarius. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.